कुछ रिक्वेस्ट आई है मेरे पास एंड दो तीन विजुअल्स के बारे में. So I'm going to very quickly go through them and in fact let me just use my whiteboard here and let's see what we will achieve today in this tutorial. So first things first, top and filters. This is something that I would like to speak about because इसकी काफी रिक्वेस्ट चाहिए. विजुअल्स हैं, कुछ मैप्स का किसी ने कहा था. Surely we can have a look at that. Cards, मल्टी कार्ड्स, ये दो विजुअल्स हैं जो हमने किए थे. maybe we'll have a look at buttons, which of course means that we'll have to look at bookmarks as well. And at the end of it all, we're going to have a look at the tax, which is calculated columns and of course measures. So काफी चीजें जो है इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर हो जाएंगी. Let's just start. Let me share my screen with you people. There you. पे एक नया पेज बनाया मैंने और इस पेज को इनफैक्ट हम ना टॉप 3 के नाम से बना लेते हैं. What I really want to do here is first create a visual और उसमें टॉप एंड फिल्टर लगाकर टॉप 3 प्रोडक्ट्स रेवेन्यू के हिसाब से देखना चाहूंगा. Let me just very quickly make the visual. It's a stack bar chart. इसमें मैं प्रोडक्ट दिखाना चाहूंगा. प्रोडक्ट ब्रांड को एक्सेस में रख रहा हूँ एंड रेवेन्यू को वैल्यूज में रख रहा हूँ. And there you go. I have my result here. And these are too many things actually. Sometimes you don't want to have a look at everything at your disposal. So इसको मैं चाह रहा हूँ सिर्फ टॉप 3 प्रोडक्ट्स जो है ना मुझे उसका रेवेन्यू ही देखे. तो एक तो ये चीज, बट उससे पहले I would just like to make it a little more comprehensive because if I move my cursor along, I'm only seeing the revenue. मैं चाह रहा हूँ कि प्राइस भी नजर आ जाए, तो प्राइस को मैं टूल टिप में रखना चाहूंगा. यहाँ टूल टिप्स के ऑप्शन में मैं प्राइस को ट्रैक कर देता हूँ. If I now hover my mouse, I'm seeing both the revenues and price, which is something which makes a little more sense. So अब मैं टॉप 3 की जानब जाना चाहूंगा. So if you really look in this middle area, you'll see filters. This is called a filter pane. तो ये फिल्टर पेन है ना, ये अभी तक हमने उस तरह फ्रीक्वेंटली यूज नहीं किया क्योंकि ना तो हमने एक फिल्टर सारे रिपोर्ट के ऊपर लगाया है ना कि पेज के ऊपर लगाया. हाँ, विजुअल के ऊपर हमने जरूर लगाया. दैट इज समथिंग दैट आई वांट टू डू राइट अवे. सो इफ आई क्लिक इनसाइड दिस विजुअल, यू विल सी दैट दिस पेन कम्स अलाइव. और इसके अंदर कुछ चीजें जो है ना जो ऑलरेडी यू नो एग्जिस्ट करती हैं वो आपको नजर आना शुरू कर जाएंगी. यहाँ पे ऑफ कोर्स टूल टिप के अंदर मैं प्राइस को लेकर गया और रेवेन्यू को मैंने वैल्यूज के अंदर रखा, वो भी आपको नजर आ रहा है. और ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ ना. सो व्हाट आई रियली वांट टू अचीव इज दैट आई जस्ट वांट टू सॉर्ट ऑफ शो टॉप 5 प्रोडक्ट्स. यहाँ पे मैं फिल्टर लगा सकता हूँ, उसको हम टॉप एंड फिल्टर कहते हैं. इफ आई प्रेस दिस एरो, ये देखो ये यहाँ पर आपके पास फिल्टर टाइप्स आना शुरू हो. और कुछ बेसिक फिल्टरिंग भी लग सकती है, बट दैट्स नॉट व्हाट इज रिक्वायर्ड हियर. व्हाट इज रिक्वायर्ड इज टॉप एंड. टॉप एंड ऑप्शन में अगर मैं टॉप 5 यहाँ पे लिखूं और बाय रेवेन्यू, यानी सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उनको उनका एनालिसिस करना चाहूँ तो रेवेन्यू को मुझे यहाँ पर लाना पड़ेगा वैल्यू के अंदर. पर मैं अगर अप्लाई करूँ तो आप देखिए इस विजुअल के अंदर तब्दीली आएगी. I'll only have my top 5 products with me. ये था आपका टॉप एंड फिल्टर. ये किसी भी विजुअल के ऊपर लग सकता है और
इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल टूल। ठीक है जी, जाहिर है आप इसको फॉर्मेटिंग ऑप्शंस में जाकर मजीद पावरफुल बना सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द राइट ऑप्शंस, और ये आप पास काफी पावर आ जाएगी चीजों को मजीद बेहतर करने की। बट आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, ऑलरेडी स्पेंड क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम sort of looking at the formatting options. तो ये तो आपका टॉप फिल्टर हो गया। मैं कार्ड्स की तरफ आना चाह रहा हूँ, which are very powerful, very simple and very powerful little visual. So just click outside this visual, and if I sort of go to, and this one is right in the middle, ये और मैं कार्ड पे लेकर आऊँ ना ऐसे, तो ये एक छोटा सा विजुअल मेरे पास बन जाएगा, जिसमें मजे की बात है सिर्फ एक ही फील्ड है, और इसमें जाहिर है आप नंबर ही दिखाना चाहोगे, बिकॉज यू नो अदरवाइज दिस डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। रेवेन्यू अगर मैं फील्ड के अंदर ले जाऊं तो ये देखो मुझे इसने नंबर दिखाना शुरू कर दिया एक। द ग्रेट थिंग अबाउट दिस विजुअल इज दैट ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट इसका है, यानी अगर कहीं पर कोई चीज क्लिक करूं तो मैं ये चेंज होगा। फॉर इंस्टेंस इफ आई गो टू माय टॉप प्रोडक्ट, यू सी दैट द रेवेन्यू इज चेंजिंग। तो जो भी फिल्टर कॉन्टेक्स्ट होगा उसके मुताबिक चीजें जो है ना वो तब्दील होंगी इस पर्टिकुलर कार्ड के अंदर। दैट्स द बेस्ट पार्ट। इफ यू आर sort of using slicers or anything else, this figure will definitely change. For instance, अगर आप एक स्लाइसर बना लें और स्लाइसर के अंदर स्टेट्स को ले आए, तो अब आप जैसे ही इसको चेंज करोगे तो you'll see that both of these visuals obviously will change. We've already talked about as how we can sort of connect one connector with another. ये हम काफी डिटेल के अंदर बात कर चुके हैं पहले। For instance, if you just want this particular thing to be attached only with this particular uh, card, आप अगर इसके साथ डिसंगेज करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली वो कर सकते हो। We will already talked about it in detail, so I'm not going to spend any time over that. इसके बाद मल्टी कार्ड के ऊपर भी मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, और just click outside very quickly, go to multi card, which is again a very powerful little tool. यहाँ पे मल्टी कार्ड आपके पास, what multi card really does is कि multiple pieces of information यहाँ पर आपको लाकर दिखा सकता है। All you have to do is keep bringing in things in the values part. For instance, cost, ठीक है, और रेवेन्यू, प्राइस कर लेते हैं, प्राइस, ठीक है, रेवेन्यू। So, now you've got a multi-card with multiple pieces of information. And of course, आप ये इसके formatting में जाके इसको तब्दील कर सकते हो, background color इसको दे सकते हो. In fact, you can do plenty of things with it. So now, if you see as my slices change, तो मेरा multi-card भी साथ ही तब्दील हो रहा है, इसकी value यानी change हो रही है। सो अगेन फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के साथ ही काम कर रहा है, उसी तरीके से जैसे हमारा सिंपल जो कार्ड है वो कर रहा है। इसका फॉर्मेटिंग ऑप्शन जरूर देख ले, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नॉट लुकिंग वेरी नाइस, इट्स टू स्मॉल, रीडेबिलिटी के इश्यूज है। ऑल ऑफ दैट कैन बी ऑब्वियसली चेंज्ड हियर। इवन you can put in background color if you want. So I'm not going to spend too much time over it, but you know where to go, what to do, because we've already discussed this option. तो ये भी आपका विजुअल हो गया। Now let's just very quickly look at buttons, because that is something that we have probably, yes, we have talked about it in the class, but
अभी तक उसकी वीडियो जो है उस एज सच नहीं बनी, so we can have a look at that as well. जी आ जाए Sir, us in the office also. साथ। ओके सो ये बटन जो है ना, they have functionality. That is the first thing that, let me just make it a little bit smaller. I want a couple of buttons here. तो अगर इंसर्ट की ऑप्शन में मैं जाऊं तो ये देखिए बटन्स है मेरे पास यहाँ पे। It's just if I want to put in a button that refreshes everything in terms of filters, removes all the filters, इनमें से कोई भी बटन वैसे मैं चूज कर सकता हूँ, because it's just an icon. But let's just go for reset. मैं ये चाह रहा हूँ कि जब भी इस रीसेट बटन के ऊपर क्लिक हो तो जितने भी फिल्टर्स है ना वो गायब हो जाए। लेट्स सी हाउ टू डू दैट। First things first, you can add up text in it. You can put in some text if you want to refresh filters. What is it? I'm just going to make it a little legible. That's it. And now this is a button. अगर आप गौर करें ना तो इसकी प्रॉपर्टीज में बटन्स की जैसे बाकी चीजें हैं, कहीं ना कहीं एक्शन का बटन भी है। सो इफ आई फॉर इंस्टेंस पुट दिस ऑन, एक्शन अगर मैं ऑन करता हूँ तो अगर आप देखें तो पूछ रहा है कि क्या करना है, what exactly, how to connect this. So there are various options. For instance, you can connect this button to a particular URL, which is the web, and page navigation, Q&A, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, but what we really want this to do is go to a previous, to a saved state. अभी इस पर्टिकुलर यू नो पेज के ऊपर फिल्टर कॉन्टेक्स्ट है, और फिल्टर कॉन्टेक्स्ट ये देखें ये है कि मैंने इस इधर क्लिक किया हुआ है और यहाँ पे स्टेट के ऊपर क्लिक किया हुआ है, तो या देयर आर फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। The first thing that I need to do is remove all the filter context. Once that is done, तो surely मैं इसको सेव कर सकता हूँ एज अ बुक मार्क, और जब मैं सेव करूंगा एज अ बुक मार्क तो फिर मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। लेट मी जस्ट शो यू एंड जस्ट सी कहाँ कहाँ पे फिल्टर कॉन्टेक्स्ट है। यहाँ डेफिनेटली इंटरनल इसका एक फिल्टर कॉन्टेक्स्ट है, सो यू नो इवन इफ वी डू नॉट बॉदर अबाउट चेंजिंग इट, दैट्स ओके। कि आप देख लें, मूव कर दें जो जो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट है, आप उसको मूव कर दें। ये देखें कैसे ये है, इधर भी I suppose there is no filter context really at large because these sort of are only connected to this, so this looks okay. अगर मेरा आइडिया ये है कि ये विदाउट, बिकॉज I have not chosen anything here or here, ये मेरा वो स्टेट है जिसके ऊपर वापस आना चाहिए उसको, जब मैं क्लिक करूँ रिफ्रेश हो तो आई कैन सेव इट, एंड इन ऑर्डर टू सेव दैट आई हैव टू सेव इट एज अ बुकमार्क। तो व्यू में अगर आप जाएं तो जाहिर है डिफरेंट पेन्स है, यहाँ पे देयर इज वन पेन कॉल्ड बुकमार्क। If I click on the bookmark, this particular things add up, and I just want to very quickly delete this because ये पहले से बनी हुई है, तो I don't want you to get confused. So यहाँ पर मैं अब एक ऐड कर सकता हूँ bookmark, and let me just very quickly do that. I'm going to add a bookmark, and I'll call it refresh, and I can even give it a name. It's a name, top 3 का पेज है, top 3 page. There you go. And now that I'm absolutely sure कि अभी कोई फिल्टर कॉन्टेक्स्ट नहीं है, मैंने कुछ भी चूज नहीं किया हुआ, बिल्कुल
फिल्टर कॉन्टेक्स्ट यानी बगैर फिल्टर के ये सारा पेज है. What I can do is simply update my refresh top 3 bookmark. अब उसने इसको ना सेव कर दिया. That's it. That's what I really wanted. अब अगर कोई यहाँ पे आप चूज करके चीजों को तब्दील कर रहे हो तो डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज वो बुकमार्क जो है वो सेव हो चुका है. एंड सिर्फ अब एक चीज रह गई और वो ये है कि इस पर्टिकुलर बटन को उस पर्टिकुलर बुकमार्क के साथ आपने सेव करना है. सो इसमें एक्शंस हैं. व्हाइल यू क्लिक दिस पर्टिकुलर बटन, आप नीचे जाके एक्शंस में चले जाएं और एक्शंस में यू जस्ट वांट this to be connected with the bookmark, and the bookmark is what, refresh top 3 जो कभी हमने बनाया है, and this really should solve the issue. फॉर इंस्टेंस अगर आप एक फिल्टर कॉन्टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, अगर मैं कंट्रोल और क्लिक करूं तो इट विल गो बैक एंड रिमूव ऑल द फिल्टर्स, बिकॉज जो प्रीवियस स्टेट मेरी थी उसके अंदर जो मैंने सेव किया होता उसमें कोई फिल्टर नहीं था. सो फॉर एग्जांपल इफ I've selected these and you see everything is changing according to how I've changed things there. तो अगर मैं वापस जाना चाह रहा हूँ उस स्टेट के ऊपर जहाँ सब अनसिलेक्टेड, all I have to do is click here. तो ये अब डिफरेंट बटन्स बन सकती हैं जिनमें आप डिफरेंट चीजें कर सकते हो. इट्स रियली अप टू यू. फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया स्पेसिफिक भी आप स्टेट बना सकते हो, टॉप 3 की स्टेट्स बना सकते हो और फिर बटन्स बना सकते हो, एंड देन यू कैन गो ऑन एंड यूज दीस बटन्स टू सॉल्व डिफरेंट इश्यूज. सो आई होप दैट आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स देयर. अब बारी है उसकी टैक्स की, और उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, थोड़ी देर तक अपलोड हो जाएगी. तो इंशाल्लाह ये मामलात आई थिंक ज्यादातर कवर हो चुके हैं जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी. तो वो टॉपिक्स जो है ना यहाँ पर कवर हो गए. एक रह गया है एंड दैट जस्ट came to my mind. That is let me see if there already is one. वो था मैप का, which by the way is very simple. There's no real, should not be problematic at all, but I have to very quickly go through that as well. Okay, so let me just create a new one. इधर ही बना लेते हैं हम. मैप का विजुअल बड़ा इंटरेस्टिंग है. There are a couple of variations. Let me just very quickly go through the first one. अगर मैप को मैं यहाँ पर ले आऊँ ना तो इसमें देखिए लोकेशन is probably the most important thing, and we already know that we've got a couple of critical pieces of information. For example, state की हमारे पास इंफॉर्मेशन है ना, अगर स्टेट को मैं लोकेशन के अंदर ले आऊं तो इट विल स्टार्ट मेकिंग अ मैप. देयर यू गो. ये इसने यहाँ पे ना दिखाना शुरू कर दिया मैप के अंदर जहां जहां स्टोर्स हैं वो दिखाना शुरू कर दिए. एंड व्हाट आई वुड रियली लाइक टू डू इज ब्रिंग द सिटीज इन पर्सपेक्टिव एज वेल. सिटी को मैं लोकेशन के नीचे रख देता हूँ. ये नाउ दिस इज ओनली गोइंग टू वर्क इफ आई ड्रिल इन. फॉर एग्जांपल ड्रिल करके अगर मैं क्लिक करूंगा ना ऐसे, only then it's going to drill down to cities, otherwise it won't. I guess बहुत जी अब ये ले ठीक है. तो अगर मैं सिटी यहाँ पर ना ला दूं तो ऑब्वियसली फिर वो सिटी लेवल पे ना जाता. लेट मी जस्ट गो बैक वेयर आई वाज. एक लेवल अप जो है स्टेट. एक चीज जो इसके अंदर है ना वो है कि सिंपली इसको इस तरह दिखा सकते हैं आप, मगर इसका कोई फायदा नहीं है. बिकॉज व्हाट वी रियली वांट टू डू इज सी कि इन स्टोर्स के अंदर सिचुएशन क्या है. सो वी हैव गॉट टू मीनिंगफुल सॉर्ट ऑफ मेजर्स दैट वी कैन वर्क विद, या कॉलम्स समझ लें उनको. एक है कॉस्ट और एक है रेवेन्यू. लेट्स जस्ट ब्रिंग इन रेवेन्यू बिकॉज रेवेन्यू मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू अस. साइज के अंदर अगर मैं रेवेन्यू लिया हूं ना तो ये क्या करेगा, ये देखें ये बबल्स बना दिए इसने, और जहां जिस स्टेट में ज्यादा रेवेन्यू है उसका वैसे ही उस रिलेटिवली साइज जो है उसे क्रिएट करती है, व्हिच इज वेरी नाइस. नाउ व्हाट यू कैन डू इज सिंपली
use the formatting options there. एक तो I don't like the color personally, but again this is a personal preference. You can choose whatever color you like. And like probably a contrasty one, so that things are clear. And what you can do is also maybe change the size of the bubbles, because I think they're too small, at least for my liking. So, yeah. So now what you can really do is tooltip में कुछ लाना चाहते हैं ले आए. It's really up to you whether you want to use it or not. ठीक है, but I think otherwise it looks okay. It's, perfectly good. So now let's have a look, and let me just make it a little big if I could. Focus mode में. There you go. So bubbles I think थोड़े से ज्यादा बड़े हो गए बाहर, ये देख लीजिएगा. Now if I want to drill in, तो ये देखिए पर्टिकुलर सिटी के अंदर चला गया, और उस सिटी के अंदर भी मुझे रेवेन्यू के हिसाब से दिखा रहा है कि कौन सी एग्जैक्टली जगह पर क्या हो रहा है. सो दिस इज वेरी नाइस. और मुझे टॉप सेलर प्रोडक्ट्स भी पता चल रही, व्हिच इज वेरी नाइस. तो जस्ट गो बैक. ये था आपका मैप. मैप की एक और वेरिएशन भी है, although I prefer this one, but it's another one. Let me find that out because I've rarely used it. Filled map. Let me इसको ये filled map, इसको भी आप यूज कर सकते हैं if you want to. Very slight variation, but just make it a little smaller. Put it here. ये लीजिए, इसको आप यूज कर सकते हैं. अगेन सेम सिचुएशन है, लोकेशन आपसे मांग रहे हैं, और लोकेशन आप इसको दे दें स्टेट, और स्टेट के अलावा सिटी रखना है आपने, इसको नीचे सिटी रख लें. लेजेंड में अगर सिटी रखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है. और अगर इसके नीचे रखेंगे तो पहले you'll have to tell it like this. But let's just try to do this. And, एक और बात जो मैं पहले बोल गया था पिछले वाले विजुअल में, कि we have latitudinal value and longitudinal value, so you can use those as well. In fact, you should use them if you have them. So ये पहले भी मुझे करना चाहिए था, but just so kind of forgot about it. इधर भी यानी इस विजुअल के अंदर भी मुझे लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूज डालनी चाहिए थी. इधर डाल देते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल, सो दैट कंफ्यूजन बाकी ना बचे. इसका फायदा ये होता है कि इफ देयर आर यू नो प्लेसेस जिनकी which sound the same, तो वो फिक्र कर लेते हैं एग्जैक्टली किसकी क्या वैल्यू है. So this is a little more precise. Okay, now let's go back to this visual. Let's see what we have here. ये लीजिए, ये अब आपको स्टोर्स नजर आ रहे हैं, तो इसमें बता भी दिए कलरिंग के हिसाब से. ये now if I bring city in the second tier of location, तो ये फिर ऐसे दिखेगा. फील्ड ये फिर भी कर रहा है. So I make it clickable. If I click here, तो ये देखो मजीद उस सिटी के अंदर ले गया, और बता रहा है कि एग्जैक्टली किस जगह के ऊपर आपकी किस किस सिटी के अंदर आपके जो है ना सिटी किस रीजन के अंदर बेसिकली आपको स्टोर्स हैं. Now this does not make a great bit of sense according to our data. तो मेरा ख्याल में ये मैप जो है ना दिस इज बेटर. आई थिंक ये हमने काफी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं.
कम से कम विजुअल्स के एतबार से। सो अगली हमारी जो कन्वर्सेशन है दैट इज गोइंग टू बी अबाउट टैक्स, so I'm just going to stop recording and I'm going to upload this as soon as possible.